स्टूडेंट्स, इस बार सैम्पल पेपर का टेस्ट मैंने स्टूडेंट्स के सामने कंडक्ट किया, लाइव वीडियो टेस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चंस जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि यदि कोई एपी है जिसका टर्म 6, 9, 12, 15 दिया हुआ है, इसका T25 माइनस T15 यानी कि 25th टर्म में से 15th टर्म को सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालना था। ठीक है, वेरी गुड। हियर A इज इक्वल टू 6 टर्म। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे A इज द 6 फर्स्ट टर्म एंड देन D दैट इज कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 6 T2 माइनस T1। वेरी गुड। एंड फॉर दिस वी नो first of all we will find T25 that is 25th term। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला सब लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ द nth टर्म ऑफ AP, जिसे हम लोग TN के नाम से जानते हैं, दैट इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। उसमें सब्सटीट्यूट करने पर आपको मिलेगा A की जगह पे 6 प्लस n की जगह पे 25 माइनस 3 एंड देन बाई इंटू 3। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 6 प्लस 24 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 72 यानी कि आपका 78 आ गया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आसानी से अब हम लोग यहाँ पे 15th टर्म के लिए फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फॉर 15th टर्म शी इज एबल टू राइट n is equal to 15 and T15 will be A plus n minus 1 into D. The same formula is used here. So 6 plus 15 minus 1 into 3, that is 6 plus 14 into 3, 6 plus 42, that is 48. Now easily we can find the value of A25 minus A15, which is equal to 78 minus 48, that is equal to 30। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के और में है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का वैल्यू हम लोग A एज्यूम करेंगे एंड कॉमन डिफरेंस D। उसके बाद TN का फॉर्मूला वंस अगेन। अब स्टूडेंट्स मैं ये भी आप लोग को बताना चाहूँगा कि TN का फॉर्मूला आप लोग बार बार लिखें। जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें TN का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो आपको उसमें लिखना चाहिए, कारण कि यदि इनकेस आपका कैलकुलेशन एग्ज़ाम में मिस्टेक भी हो जाता है तो यदि मार्क्स देने की बात आएगी तो आप लोगों को फॉर्मूला पर मार्क्स अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7th टर्म इज इक्वल टू A प्लस 6D हुआ और 5th टर्म आपको A प्लस 4D दैट इज n माइनस 1 इंटू D करके निकाला गया। अब क्वेश्चन है क्या कि क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि अब स्टूडेंट इसको लिखने जा रहे हैं 7 टाइम्स द 7th टर्म, yes 7 into 7th term, 7 into 7th term, that is A plus 6D is the 7th term and 5 into the 5th term which is equal to A plus 4D। यहाँ आपको सिंप्लीफिकेशन करके A और D में एक रिलेशन मिलने वाला है।
ब्रैकेट तोड़ने पर 7a + 42d इज इक्वल टू 5a + 20d। सेवन ए की तरफ 5a को बुलाया गया, 7a - 5a इज इक्वल टू 40d - 20d इज इक्वल टू 0। मतलब कि फाइनली अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 2a + 22d इज इक्वल टू 0। चाहेंगे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। यस, वेरी गुड। a + 11d इक्वल्स टू 0। ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट टारगेट, व्हाट वी हैड टू फाइंड। हम लोग को पता नहीं करना था द 12th टर्म, प्रूव करना था कि व्हाट इज फाइंड आउट करना था 12th टर्म्स पी में। तो 12th टर्म के लिए हम लोग आसानी से लिख सकते हैं a + 11d, एंड a + 11d का वैल्यू हम लोग अभी भी निकाल चुके हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। That value is equal to 0, so it will be 0. Now second student is called, second question यानी कि question number 2, question है कि mx into 5x - 6 is an equation. So for what condition both of the roots of the equation are equal, means the value of d will be equal to 0. सो सबसे पहले स्टूडेंट ने क्या किया कि पहले मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को तोड़ करके mx को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, और इन्होंने लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि अब इन्होंने दिखाया कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, ax + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। नाइस परफॉर्मेंस। नाउ d everyone know b² - 4ac. First of all, he is going to find the value of d, which is equal to b² - 4ac. Yes, nice. Now b is 6m - 6m, whose square is 36m² - 4 into 5m into 0. So here it is mistake he has done. Now he is going to correct his mistake. Now the value of d he has calculated and is equal to 36m², and in this case you are able to see for equal roots he has written the condition for equal roots the value of d is equal to 0. So 36m² will be equal to 0, and finally m² is equal to 0, and the value of m will also be equal to 0. So value of m is 0. Yes. No, I think he has done somewhere mistake. Yes, he has corrected his mistake. Yes, nice. This is the condition. Yes, but m should not be 0. Yes, I want to talk about why m should not be equal to 0, because the standard form of quadratic equation, the formula is ax² plus bx plus c equals to 0, then the value of a will never be equal to 0. Now come to the next question. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें एक लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि P से 2 टेंजेंट PA and PB is drawn to the circle whose radius is r, and one more fact is given that this OP is equal to twice of the radius. So you have to find the angle in this CBSE sample. Per next question number 2, we have to find angle APB. APB we have to calculate. For this we should know he has written that PA is equal to PB, means 2 tangents drawn from an exterior point to the circle are equal in length. And next one, he has written angle OAP is equal to 90 degree. This is because all of you know that radius and tangent are perpendicular to each other. So
if we will find the angle OPA and then we will double it, value of angle OPA will be calculated and just after that it will be doubled. So here see all of you, he has taken cos. You can take anything, cos, sine, whatever, but I think it will be more easier to simplify when you use cos theta, sorry, sine theta. As he is taking, yes, now he has corrected his, he was watching the question again and again and figure again and again. Now he is able to write correctly. So it is OA upon PO. OA upon PO, it means R by 2R. Here both are cancelled. So you can see sine theta is equal to 1 by 2. So, so theta you can calculate, if you have remembered the formula for trigonometry, sine 30 degree gives 1 by 2. It means this angle OPA is equal to 30 degree. So student, if you know one angle is 30 degree, so double it. After doubling it, 30 each, 30 is equal to 30, that is 60 degree. One theorem is also applicable here, that two tangents drawn from an exterior point to the circle are equally inclined with the line segment joining the center to that point. That is why the angle was doubled. Now he has taken this whole angle APB as 60 degree. Sorry, so yes, 30 plus 30, that is 60 degree. Now he is able to write that a triangle was isosceles triangle. He was writing कि किसी भी ट्रायंगल के जब दो साइड्स इक्वल हो तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है, बेस एंगल्स इक्वल. ही वाज राइटिंग. और अब यहाँ पे एंगल सम देखिए, यस वेरी गुड, ही हैज़ रिटन हियर. यू कैन सी कि यदि दो ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं, क्योंकि टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल है, दोनों को x मान लिया गया और एक एंगल इन्होंने कैलकुलेट कर लिया था. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PAB ही हैज़ written x60 plus x equals to 180 degree, 2x is equal to 120 degree, and then finally x is equal to 120 by 2, that is 60 degree, means it is 60 degree each. So this triangle will be equilateral triangle. Perhaps this was our target, and in this way he is able to perform his task. Very nice presentation. If each student will start explaining like a teacher, then each one will help other students. Now another student has come for the next question. You are able to see here the next question of this sample paper, CBSE sample paper, is the curved surface area of the cone is given. It is 12,320 centimeter square and radius of this cone is 56 centimeter. Find its height. So she has assumed the height of the cone is x. Now you all know the curved surface area of a cone is pi RL. Now substituting the value of curved surface area, it has become 12,320 is equal to 22 by 7 into 56 into L. Cancelling and multiplying. Yes, very fast calculations he has. Now it is 176 L is equal to 12,320. Finally, the length of the L she has calculated, it is 70 centimeter. Yes, nice, very nice, good presentation. So I was talking that if each of the student will start doing and acting like a teacher,
each and every concept will be go deep inside the brain. Now the relation between L, H and R. L square is equal to H square plus R square. Every one of you must have remembered. And students, I must tell you that if you have not remembered, प्लीज़ इसको जरूर याद कर लें. और अब 70 का स्क्वायर आप देख सकते हैं, 4900 x square. Yes, so fluently she is writing as if she has remembered all the squares very easily. Now 4900 minus 3136 is equal to x square. It means 1764 is equal to x square, and 1764 means square root of 1764, it gives you 42. So height of the cone is 42 centimeter. Very correct, very correct. Now next question was about the mode, and we have to find the missing frequency. If the mode is given, model marks is 45, so you are able to see mode is given and solved by the next student. You must remember the formula, students. See, mode is equal to L plus F0 minus F minus 1 by twice of F0 minus F minus 1 minus F plus 1 multiply H. So this formula must be applicable here. So you must see, students, for the question, see the sample paper. Now there you will identify L. L is the class interval, lower limit of the class interval 40 to 60. और ये 40 to 60 कैसे हम लोग को L पता चला, उसके लिए आपको मॉडल क्लास हेल्प करेगा. मॉडल मार्क्स आपका कितना है, मोड आपका 45 है, तो 45 जिस क्लास इंटरवल में आया है, शी हैज़ रिटन वेरी करेक्टली that in class interval 40 to 60, this 45 lies, so the value of L is 40, and F0 and F minus 1 and F plus 1. You must remember that F0 is the frequency of that very model class, and F minus 1 is the frequency of the class just before the model class, and F plus 1 means the frequency of the class just after the model class. Now here you are able to write mode was given, so 45 is equal to 60 plus, and you are able to see it is x minus, yes, the original frequency of that very class, model class, was missing. It was not given, so we have assumed it as x. Now x minus 10 is the previous frequency, and minus 6 is the next frequency of the model class. So she has written everything, and this 20 is the length of the class interval. The class interval was 40 to 60, so the difference is 20. So she is writing very nicely everything. Now 45 minus 40, when she will bring 40 left side, it will be 5, and then she has sent this 20, which is at the extreme of this, there it will be division. Now after dividing 5 by 20, you will get 1 by 4 to the left side. Now you are able to see yes, very shortcut method she has used, very good calculation, one step, two or more calculation. आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन सी, इन्होंने 2 को कॉमन लिया, x माइनस 16 में से x माइनस 8 बचा, वो 2 वापस 1/4 के 4 से कैंसिल कर दिया गया, फिर जो 2 बचा रिमेनिंग 2 उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उधर लाया गया x माइनस 10 के पास, एंड फाइनली शी इज एबल टू राइट 2x minus x, that is x, and then 20 minus 8, that is 12. Yes, very good.
Thank you, students, for watching. Just one to question number 6 is over of NC सॉरी ये सैम्पल पेपर का. अब ये जो सैम्पल पेपर है हम आगे भी इसको अब आप लोग के लिए अगले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाएंगे. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई this class has done very good, very nicely performed. Thank you at all.